Audible to everyone, madam? Sure. See this question, madam. Question number 43. The graph shows the variation of the displacement of the particle executing the SHM with the time. So we infer from this graph that the y versus time graph they rakha hai beta. Is asking the force is 0 at 3t by 4. At 3t by 4 0 नहीं हो सकता क्योंकि it is having the maximum amplitude. Okay. So force is 0 at 3t by 4 बोल रहा है, ये wrong हो जाएगा. The velocity is maximum at t by 2. देखो t by 2 right now if I am taking right now. T by 2 velocity v will be equal to how much beta? V is equals to your a into your omega. Isn't it? So this is also not possible. The acceleration is maximum at your t. Okay, at your t value देखो यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे हैं basically यहाँ पर हो गया मेरे पास एक t. Isn't it? So for one complete cycle, the acceleration is maximum. Acceleration is maximum at your what beta? Maximum amplitude, because a max is equals to how much will be? A into your minus of your a into your omega square. Isn't it? यहाँ पर amplitude कितना होता है बेटा? 0. तो ये भी नहीं हो सकता. Potential energy is equal to total energy at a time t by 2. So at time t by 2, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? Velocity of the particle क्या हो रही है बेटा? 0. Isn't it? So at a time t is equals to 0, at t by 2, v is equals to 0. So kinetic energy is 0 हो जाएगी. So total energy will be equal to your potential energy. So t will be the answer for this. Then check. Next one. Three masses 700 gram, 500 gram and 400 gram are suspended at the end of a spring as shown and are in equilibrium. When 700 gram mass is removed, the system oscillates with a period of 3 seconds. When 500 gram mass is removed, it will oscillate with a period of your how much? देखिए बेटा, when mass of 700 gram is removed, the left out mass will be equal to how much बेटा? 500 plus 400. Isn't it? तो इसका time period कितना हो जाएगा बेटा? 700 is been removed. The system oscillates with a time period of your how much? 3 seconds बोला. यानी t is equals to 3 seconds. That is equals to 2 pi under root of your. Isn't it? Mass will be equal to your how much will be? 500 plus 400 divided by your k. This is my equation number 1. Okay. So when 700, 500 and 400 grams are suspended at the end of the spring as shown in equilibrium, when 700 grams is removed, the system will oscillate with a period of your t seconds. When 500 gram is removed, यानी 500 gram जब आप निकालोगे, is also removed. यानी 700 तो पहले निकाल ही दिए, उसके बाद फिर आपने 500 भी निकाल दिया, तो बचा कितना? 400. तो जब टाइम पीरियड कितना होगा तो वो मुझे नहीं मालूम. So I'm taking that one as a t dash. It is equals to 2 pi under root of बचा मास कितना? 400 divided by your k. ठीक है ना? This is your equation number 2. दोनों को डिवाइड करो. Divide 1 divided by your 2. So it is 3 divided by your t dash is equals to. So root के चले जाएगा बेटा. That is under root of your 500 plus 400 is 900 divided by your 400. A2 भी चले जाएगा. So this will be equal to 3 by 2. तो ये 3 और ये 3 चले जाएगा. तो t dash will be equal to your 2 seconds. So t dash will be equal to 2 seconds. Clear है? चलो एक मिनट. चलो 41 देखो बेटा. One end of the spring of a force constant K is been fixed to a vertical wall and the other to the block of B, to the block of mass M resting on a smooth horizontal surface. There is another wall at a distance of your x0 from the back होना चाहिए actually. The spring is then compressed by 2x0 then released. The time taken to strike the wall will be equal to how much? तो देखो मैं इसका अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. One end of the spring of a force constant K
तो इनिशियली मान के चलो ये यहाँ पर कहीं पर था, ये स्प्रिंग था यहाँ पर ऐसा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कहीं पर गया, फिर फाइनली ये अपनी वॉल है, दैट इज नथिंग बट योर सी। सो दिस इज हो गया ए और ये हो गया बी। सो लास्ट प्रॉब्लम, हाँ भेज देता हूँ बेटा मैं, डोंट टेक टेंशन। So one end of the spring of force constant K has been fixed to the vertical wall and the other to the block of mass M resting on the smooth horizontal surface. There is another wall at a distance of your x naught. Okay. Uh, okay. The spring is then compressed. Finally, spring को compress किया by a distance of 2x naught and then released. So time taken to strike the wall will be equal to how much? यानी ये से लेके C तक जाने के लिए टाइम। So time taken to move from your A to C will be equal to time taken to go from your A to B, extreme से mean position तक, plus then from your B to C. Okay? देखो एक्सट्रीम से मीन तक जाने के लिए टाइम कितना होता है बेटा? t/4 सेकेंड, अपने को मालूम है, प्लस दिस इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम योर B to C। ठीक है ना? मतलब B to C क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? B to C will be equal to how much? डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, y is equals to लिखता हूँ यहाँ पर, लिख लो y is equals to your a into your sin omega into t। ठीक है ना? y मतलब क्या है यहाँ पर? B to C, amplitude is nothing but a to b, a to b is nothing but of your amplitude into sin omega will be 2 pi by capital T into time taken to go from your B to C, है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 2x0 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास? x0 है। तो आई कैन से दैट BC डिवाइडेड बाय योर AB will be equal to your sine of your 2 pi by capital T into time taken to go from B to C. Okay, B to C कितना है बेटा? x0, A to B कितना है? 2 times of x0, that is equals to sine 2 pi by capital T into time taken to go from B to C। x0 चले गया, तो इसमें से निकालो, ये हो गया 1/2, 1/2 is equals to sine of your 2 pi by capital T into time taken to go from your B to C, isn't it? तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाफ कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ योर साइन बेटा? तो ये बन जाएगा टाइम टेकन फ्रॉम B to C विल बिकम फॉर मी T/12। ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसको यहाँ पर लिख दो बेसिकली, B to C आ गया, देन टाइम टेकन टू गो फ्रॉम योर A to C विल बी इक्वल टू T/4 प्लस ऑफ योर T/12, यानी दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? T का वैल्यू कितना हो जाता? T/4 प्लस T/12 कितना आ रहा बेटा? देखो एक बार जल्दी से, T/6 आ रहा, T/12 प्लस T/12 प्लस T/4 कितना आ रहा बेटा? T/3, ओके, T/3, T मतलब कितना बेटा? 2 pi by 3, so it is 2 pi by 3 under root of your m divided by your k। आ गया? एक बार देख लो, आ गया बेटा? गुड क्वेश्चन। What did everyone?
Sure, next question. So what will be the answer for this one? Third option will be the answer. Sure, next one देखो बेटा. Two simple pendulums of length 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction. Okay. They will again be in the phase when the pendulum of shorter length has completed how many oscillations? Two pendulums of length 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction. At the same time, they will again be in the phase when the pendulum of shorter length has completed how many number of oscillations? देखो टाइम पीरियड और ऑसिलेशंस का रिलेशन क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी से लिख सकते हैं अपन. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू योर 1 बाय योर n, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर l बाय g दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय n, and n is inversely proportional to root of your l. ठीक है, so I can write here number of oscillation of the shorter one into time period of the shorter one will be equal to number of oscillations of the longer one into time period of your longer one. ठीक है, so this will be number of oscillations of the shorter, time period of the shorter will be 2 pi under root of your length कितना दिया हुआ एक वाला का 5 divided by g, that is equals to n of your longer one into this one is 2 pi under root of और का length 20 divided by g, 2 pi चले जाएगा, root g और root g भी चले जाएगा. ठीक है ना, so I'll be getting here right now number of shorter length into root 5 is equals to number of longer length into root of your 20. ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई, ns root 5 into root 20, 5 4s are 20 यानी रूट निकाल दिया तो it will become for me कितना आ रहा है, ns is equals to 2 times of your nl. ठीक है, यानी nl will be equal to how much बेटा 1 and ns will be equal to your 2. Clear? What will be the answer? Good question, but again, very good. Next one. The horizontal platform with an object placed on it is executing SHM in the vertical direction. The amplitude of the oscillation is 3.92 into 10 power minus 3 meter. What must be the least period of this oscillation so that the object is not detached from the platform? Okay. एक देखो बेटा मेरा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है like this. And it is executing the SHM in the upward and downward direction ऐसा, और ये जो है ना it is not getting detached with this one. अगर ये detached नहीं हो रहा है मतलब देखो weight of this body is in the downward direction, normal reaction is acting in the upward direction. Okay, and amplitude of this platform will be in the downward direction. So amplitude कितना होता है बेटा, what will be the amplitude for this one? Acceleration of the platform is up and down. फोर्स अगर मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी से बताओ. How can I write the value of force? F is equals to minus of your m into your omega square into x. X is nothing but amplitude. इतना ही ना बेटा, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, mg minus normal reaction is equals to mass into acceleration. A is your acceleration. ठीक है, so that will be equal to your mg minus A is your acceleration. For critical condition r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 m into acceleration का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, acceleration is equals to your amplitude A into your omega square. M और m gets cancelled. So we're getting G is equals to your A into your omega square. यानी omega is equals to under root of your G by A.
वैसे भी लिख सकता हूँ, जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्म में ले रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड। SHM से लिखा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट। Then RL's F is equals to M into A is equals to minus of M into your omega square into A. MM gets cancelled, so acceleration हो गया A is equals to minus of omega square into your A. तो omega square is equals to A divided by capital A. यानी omega is equals to under root of your A by your capital A. A is your acceleration beta. आया? फोर्स यहाँ पर G के बराबर दे रखा है ना, सॉरी, वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन फॉर मी और mg। ऑलरेडी एक्सेलरेशन ले लिया ना, इस पे फोर्स कितना होता है mg, ये हो जाएगा mg, ए मास गेट्स कैंसिल, सो g इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू योर ये, तो ओमेगा बना कितना मेरे पास, अंडर रूट ऑफ योर g डिवाइडेड बाय योर ये इज योर एम्पलीट्यूड बेटा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना बनेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, so that is equals to 2 pi under root of your, this will become for me your a by g, इतना ही ना, ओमेगा ही निकाल दो ना, नहीं तो हो जाता सीधा सीधा। ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड दे रखा है 3.92 इंटू 10 पावर -3, कितना आ रहा देखिए, नहीं बेटा, ये एक्चुअली कितना कैसे लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना, एफ नेट मतलब mg माइनस r इज इक्वल्स टू m इंटू ये, ओमेगा कितना आ रहा है देखिए बेटा, 50 आ जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, सो इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 50, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.1256 सेकंड्स कुछ आ जाएगा। you check with the options, this will be the first option, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए बेटा। हाँ चलो नेक्स्ट वन, ये वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। A U-tube of uniform bore of cross-section area A has been set up vertically with open end facing up. Now m gram of the liquid of density D is being poured into it. The column of the liquid in this tube will oscillate with a time period of your how much? इसको डिराइव कर लेता हूँ मैं क्लास में एक बार, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको रोटेशन हो गया तो ही कर सकते, वरना करना मुश्किल हो जाएगा बेटा इसको। ये वाला देखो, साइन क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ता है अपने को यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए एक बार। The displacement of the particle varies with the time as x is equals to दे रखा है यहाँ पर 12 into sin omega t minus 16 into sin cube omega into t, sin cube का डाउट है बेटा, sin 3 theta is equals to 3 into your sin theta minus 4 into sin cube into theta, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देख लीजिए, x is equals to, अगर मैं 4 कॉमन ले लिया, into 3 into your sin omega t minus 4 into your sin cube omega into t, and that will become for me 3 sin theta minus 4 sin cube theta will be equal to how much, 4 times of your sin of your 3 theta, that means 3 times of omega t, okay। So x maximum मतलब क्या हो जाएगा, amplitude, so x max will be equal to your, this will become how much for me बेटा, 4 into sin of your 3 omega t per deflection, so it is your a into your omega, but now ये हो जाएगा 3 into your omega का whole square, 9 4s are 36 into your omegas, this will be the answer। ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको,
This is your acceleration. मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा ना, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आता, वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करोगे acceleration आएगा. I hope this differentiation you know it, so I'm leaving that one for you. The answer will be 36 into your omega square. ये वाला, two particles are executing the SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. They pass one another while going in opposite direction, and each time the displacement is half of their amplitude. The phase difference between them will be equal to your how much? मैंने ऑलरेडी फेज डिफरेंसेस के फॉर्मूलेस करवाया था. Two particles are executing the simple harmonic motion of same amplitude and frequency along the same straight line. They pass one another while going in opposite direction. Each time the displacement is half of their amplitude. I'm using the relation y is equals to a into your sine omega t plus some phi naught. Okay. क्योंकि इसके पास है सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, सम एम्पलीट्यूड है, तो इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. तो एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? a/2 इज इक्वल्स टू योर a इंटू साइन, a बन जाएगा ओमेगा टी प्लस ऑफ योर फाई नॉट. तो ये चले गया, तो फ्रॉम दिस वन हाफ ऑफ द साइन साइन पे चले जाएगा, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी इधर पाई/6 और 5π/6. वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं? ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को कराया था. ये इसका मेन पोजीशन है, वो ये हो गया पार्टिकल P, और ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन. और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस दे रखा है इसने प्रॉब्लम में a/2 हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. और पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली विल बी टेकिंग फाई की वैल्यू टू बी इक्वल टू योर पाई/6 बट नॉट 5π/6. ओके, एज इट इज गोइंग टुवर्ड्स योर B, so velocity is positive. Okay, अगर वो के पास जाता तो 5π/6 लेता, opposite direction. Okay, so phi is equals to 5π/6 in opposite direction. In opposite direction. मान के चलो अगर ये पार्टिकल B होता, एक्सट्रीम पोजीशन ये होता, ये मेन पोजीशन है वो, और ये पार्टिकल जो P पे पड़ा हुआ है ना, अगर ये टुवर्ड्स ओरिजिन जाता इस तरह से एरो मार्क टुवर्ड्स होता, तो वेलोसिटी नेगेटिव होती, तो फाई की वैल्यू कितनी होती? 5π/6. तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 5π/6 माइनस ऑफ योर 5/6. So that will be equal to your 2π/3, यानी that will be equal to 120 degrees. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Two masses m and m are suspended together by a massless spring of constant decay. When the masses are in equilibrium, m is removed without disturbing the system. The amplitude of the oscillation will be equal to your how much? दोनों के masses सेम है ना बेटा? m1 m2 क्यों आया? शायद m1 m2 होना चाहिए. This should be equal to your m1 और ये होना चाहिए m2. देखो यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है m1, देखो डायग्राम में क्लियरली m2. ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट k. When two masses m1 and m2 are suspended together by massless spring of a force constant k, when the masses are in equilibrium, क्या करना है इसको? m1 is removed mother. m1 is removed without disturbing the system. The amplitude of the oscillation is how much? क्वेश्चन करेक्शन कर लो बेटा. अगर m1 निकाल दिया हमें बेसिकली, तो बचा कितना? m2. So when m1 is removed, so this will be your m2 into your g will be equal to k into your l. Okay, when both of them are present, it is m1 plus m2 into your g is equals to k into your l plus extension is like say delta l.
isn't it? So extension is delta L beta, which is nothing but amplitude. So I can write this one as M1G plus M2 into G is equals to K into L plus K into delta L. So it is M1G plus M2 into G can be written as K into L. So this K into L is equals to KL plus K into your delta L. So this will become for me M1G is equals to K into your delta L. This one will get cancelled. So he's asking the extension of it. The matlab delta L is nothing but amplitude here. So delta L will be equal to your M1G divided by your K. This will be the answer, first option. Done. The mass is attached to a spring oscillating every 2 seconds. If the mass is increased by 2 kg, then the time period increases by 1 second. Then the initial mass is how much? Okay. Time period of the simple pendulum ka formula T is equals to 2 pi under root of your M divided by your K. So my potential around T2 divided by T1 is equals to under root of your M2 divided by M1. So okay, so T2 seconds है और इसको increase किया देखो T1 is equals to 2 seconds दे रखा है और T2 is been increased by 1 यानी 2 plus 1 that will be equal to 3 यानी 3 divided by 2 is equals to under root of your M plus 2 divided by your M. ये बन जाएगा 9 by 4 is equals to M plus 2 divided by M. So this will become how much for me right now? 9M is equals to 4M plus 8. ठीक है? तो 9M में से 4 निकालो तो कितना बन जाएगा? 5M. 5M is equals to 8. So M is equals to 8 by 5 kg. So 8 by 5 मतलब 5 ones are 1.6. 1.6 kg. Here will be the answer. Sure. Very good. Next one. Two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. A mass is being suspended from them. The ratio of their frequencies for the vertical oscillations will be equal to how much? ये देखो बेटा series combination में है और ये जो है ना parallel combination में. तो time period का formula क्या होता है? T is equals to 2 pi under root of your K by M. This is your M by your K. Frequency मतलब reciprocal of your time period. यानी n will be equal to your 1 by 2 pi. This will become under root of your K by M. So n in series divided by n in parallel is equals to under root of your K in series divided by K in parallel. So that is number of oscillation in series divided by number of oscillation in parallel is equals to under root. ये बन जाएगा K by 2 और ये बन जाएगा 2K. तो ये बना कितना मेरे को 1 by 2. What will be the answer for this one, beta? 1 is to 2. Direct question. Next one. A spring has a certain mass suspended from it and its period for the vertical oscillation is T. The spring is now cut into two equal halves and the same mass is suspended from the one of the halves. The period of the vertical oscillation is how much? देखो यहाँ पर time period कितना होता है बेटा? T is equals to 2 pi under root of your M by your K हो जाएगा. And K की value क्या है? Inversely proportional to the length है. So when spring is half in length, then K will become how much बेटा? Twice बन जाएगा ना बेटा? Isn't it? When the spring is right now for me half, then K will become how much for me? The spring is cut into two equal halves बेटा. यानी देखो ये spring है, यानी ये L by 2 बन जाएगा और ये L by 2 बन जाएगा. K into your L must be constant है ना. So K into your L will be equal to your K dash into your L by 2. L और L gets cancelled, so K dash will become for me 2 times of K. मैंने already आपको बताया था. So T dash will become for me 2 pi under root of your, this is your M divided by K dash. यानी ये बन जाएगा 2 pi under root of your M divided by 2 times of K. यानी this will become for me
दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 और ये हो गया टी डैश इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर रहे तो क्या आता, दोनों को डिवाइड कर लो, टी डैश डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू 1/√2 आ जाएगा। तो टी डैश विल बी इक्वल टू टी बाई योर रूट, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। t/√2 मतलब b, ठीक है। चलो, two pendulums begin to swing simultaneously. If the ratio of the frequency of the oscillation of the two is 7:8, then the ratio of the length of the two pendulums will be equal to how much? I already told you beta, number of oscillations कैसे related होता है, inversely proportional होता है। तो n1 t1 will be equal to your n2 into your t2, यानी n1 divided by n2 will be equal to your t2 divided by t1, or that is equals to under root of your L2 divided by L1. And I can write here L1 divided by L2 is equals to N2 divided by N1 का whole square। तो ये बन गया मेरे पास 8/7 whole square। 8 8s are 64, 7 7s are 49. So 64:49 will be the answer. Done. Chalo. Next one. If the length of the simple pendulum is increased by 44%, then the value of the change in time period will be equal to charge नहीं होता ये, it should be change in the time period of the pendulum will be equal to how much? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने कल ही क्लास में कराया था, t is equal to 2 pi under root of your L by G। तो t2 divided by t1 will be equal to under root of your L2 divided by L1, isn't it? So परसेंटेज निकालने का तरीका बताया था मैंने आप लोग को, t2 minus t1 divided by t1 into your 100 is equals to your root of your L2 minus root of your L1 divided by root of your L1 into your 100। तो पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 144%, यानी रूट ऑफ 144 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस रूट ऑफ योर 100, इनिशियल 100 मान के चलते हैं, सो रूट ऑफ योर 100। सो ये बन जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1। कितना बन रहा है बेटा? 20%, वेरी गुड। That comes out for me 20%. Calculation कर लेना। This will become for me root of 144 divided by 100 is 12/10। ये बन जाएगा 12/10 minus 1, ओके, इंटू इसको 100 का, ठीक है, पता है ना बेटा? 12 minus 10, 2 divided by 10, it is 2 divided by 10 into your 100 आएगा, ये वाला चले जाएगा, 2 into 10 that will be equal to 20%। चलो नेक्स्ट। The length of the seconds pendulum, seconds pendulum क्या होता है बेटा? The time period जिसका 2 seconds होता है उसको हम लोग बोलते हैं seconds pendulum। The length of the seconds pendulum on the surface of the moon where g is 1/6 of the value of that one, okay। Time period formula t is equals to 2 pi under root of your L by G। तो अंडर रूट ऑफ योर एल और बाई जी इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, यानी लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन योर अर्थ। अर्थ पे कितना है मेरे पास? लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम बोल रहा है, अर्थ इज 1 मीटर, ओके, लेंथ ऑन द अर्थ इज 1 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू जी ऑन योर moon divided by g on earth। g on moon is 1/6 of the value, यानी g by 6 times of g। ये वाला चले जाए तो length on the moon will be equal to 1/6 meter। ये will be the answer, ठीक है। Next one, the second pendulum is placed in the space laboratory orbiting around the earth at a height 3r, where r is the radius of the earth। The time period of the pendulum will be equal to your how much for me? सेकेंड पेंडुलम इन द स्पेस लैबोरेटरी, स्पेस लैबोरेटरी में जी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 0। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा? इन्फिनिटी, कल ही कराया था मैंने क्लास। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट वन। A man measures the period of the simple pendulum inside a stationary lift and
find it to be 7 seconds. If the lift is accelerating upward with an acceleration g by 4, then the time period of the pendulum will be equal to your how much? ये भी directly question है. When the lift is moving in upward direction, t is equals to 2 pi under root of your L divided by g plus a. कल ही क्लास में करवाया था मैंने आप लोग. इनिशियल कंडीशन विल बी ये हो गया टी डैश, जब थेरी भी होगी अंडर रूट ऑफ योर एल बाई जी, ये एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है, तो टी डैश डिवाइडेड बाय योर टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर जी बाय योर जी प्लस ये, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी प्लस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है जी बाय 4, तो एवरीवे जी गेट्स कैंसल, इट इज 1 प्लस 1 बाय 4 इज नथिंग बट रूट ऑफ योर, ये बन जाएगा 5 by 4 यानी 4 बन जाएगा, ये विल बी बिकम 4 by 5. It means t dash will become for me 2t divided by root 5. Third option. क्योंकि this will become for me 2 divided by root 5 ना, ये t उधर चले जाएगा, t dash is equal to 2t divided by root. हाँ बेटा फ्री फॉल के कंडीशन होगा ना फिर. जी माइनस ये चलो ये वाला देख लीजिए. The mass and diameter of the planet are twice those of the Earth. The period of oscillation of the pendulum on this planet will be equal to your how much? ये तो अपन ग्रेविटेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं. G की वैल्यू will be equal to your capital G capital M divided by your R square. So G on Earth divided by G on your planet will be equal to mass of your Earth divided by mass of planet into radius of your planet whole square divided by radius of the Earth whole square. And a radius of the Earth divided by radius of your planet will become how much for me better? 2 by 1. Already पूरा डाटा दे रखा है प्रॉब्लम में. T is inversely proportional to your root of your G. So time period on the Earth divided by time period on the planet will be equal to under root of G on planet divided by G on your Earth. तो ये बन गया मेरे पास 2 divided by T on planet divided by under root of 1 by 2. तो G on planet कितना बना बेटा? G on planet is equals to 2 root 2 seconds. The option will be the answer. Sure. The motion of a particle executing SHM is given by x is equals to 0.01 sine 100 pi t plus 0.5, where x is in meters and time is in seconds. Pi t plus of 0.5. Okay. So time, the time period पूछ रहा ना, तो ओमेगा is equals to 2 pi by capital T हो जाएगी ना बेटा. ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ऑफ योर 100 है ना, तो x is equals to 0.01 into sine 100 into pi t plus 100 into your 0.5. तो ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई हो जाएगी. So this is 100 pi is equals to 2 pi divided by t. Pi gets cancelled. 2 ones are 2 5s are. तो t की वैल्यू हो गई मेरे पास 1 by 50. 1 by 50 मतलब 0.02 seconds. चलो next one. A particle starts a simple harmonic motion from the mean position. Its amplitude is A and total energy is capital A. At one instant, its kinetic energy is 3E by 4. Its displacement at that instant will be equal to how much? Okay. Kinetic energy there. Particle starts from the start simple harmonic motion from mean position. Its amplitude is A and total energy is E. At one instant, its kinetic energy is 3E by 4. Its displacement at that instant will be equal to your how much? देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है अपने को. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का होता है हाफ इंटू एम इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर ए स्क्वायर. ओके, तो
मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, half m omega square will get cancelled, so it is a square minus y square divided by a square आ जाएगा, and it is 1 minus y square divided by a square. और काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, 1 instant 3/4 दे रखा है, तो I can write this one as of your 3e divided by 4 divided by your e is equals to 1 minus of y square divided by a square. E और e gets cancelled. They bana 3/4. 3/4 is equals to 1 minus y square divided by a square. तो y square divided by a square कितना आ जाएगा बेटा, 1 minus 3/4. 1 minus 3/4 मतलब 1/4. तो y square by a square ये हो गया, तो y is equals to how much for me, a/2. Y is equals to a/2. B option will be the answer. Next one. When mass M is attached to a spring of a force constant K, then spring stretches by L. If the mass oscillates with an amplitude of your, what is this? Everything is given in terms of L. The mass M is attached to the spring. ये हो गया स्प्रिंग, इसको कैपिटल M अटैच कर रहे हैं, तो इसका वेट हो जाएगा mg और इसमें हो जाएगा k इंटू एक्स, तो mg इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स आ जाएगा, सो दैट इज योर mg इज इक्वल्स टू k, x की वैल्यू दे रखा है l, and oscillates with amplitude of your l, यानी amplitude is also given as of your l. What will be the maximum potential energy? Okay, u max का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, half of your k into your a square, and that is equals to half into k, this will be equal to l square, and that will be equal to your half into k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, mg divided by your l into your l square, a square और l चले जाएगा, तो this will be equal to your mg into your l divided by 2. थर्ड ऑप्शन, ठीक है. Next one. The total energy of a particle executing SHM is 80 joules. Okay, total energy is given for me. Total energy is 80 joule. What is potential energy? Potential energy is how much? When particle is at your y is equals to your 3/4 times of your a from the mean position. So energy divided by total potential energy divided by this one. Potential energy is half into m into omega square y square divided by हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला चले गया, ये आ गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है u, टोटल एनर्जी दे रखा है 80, तो y वैल्यू दे रखा है 3/4 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर विल गेट कैंसल, दिस विल बी 9/16, so u value will be equal to how much beta, 9 into 80 divided by 16, so that will come out for me 45 joules. Done beta. Next one. For an SHM, amplitude is 6 centimeter. If instantaneous potential energy is half the total energy, then displacement of the particle from the mean position will be equal to how much? For any SHM, amplitude is given as 6 centimeters. If instantaneous potential energy is half, yani potential energy is equals to half of your total energy. That means half into m into your omega square y square will be equal to half of your half into m into your omega square into a square. Half omega square will get cancelled here. So y square is equals to a square divided by 2. So y is equals to your a by your root 2. Amplitude is another 6 by root 2. 6 by root 2 is 4.2 centimeters. B will be the answer. Next question. The kinetic energy and potential energy of a particle executing simple harmonic motion will be equal to when displacement is how much? So kinetic energy and potential energy of particle executing SHM will be equal. So okay, he is asking that kinetic energy is equal to your potential energy. So displacement कितना होगा? Kinetic energy का formula half into m into your
omega square into your a square minus y square is equals to half into m into your omega square into y square. Half omega square will get cancelled. A square minus y square is equals to y square. So a square will be equal to your 2y square. So y will be equal to your a by root 2. So y is equals to your a by root 2. Third option will be the answer. Done. A particle is executing the simple harmonic motion. The kinetic energy is given by k is equal to k naught cos square omega t. The maximum value of the potential energy will be equal to how much? See, cos square omega t की maximum value कितनी हो जाएगी बेटा? 1. So k max will be equal to k naught into your cos square omega t. That will be equal to k naught into 1. That will be equal to k naught. So also we can say that k max will be equal to your maximum potential energy. So that will be also equal to k naught. Time हो गया और 5 मिनट है ना. A particle is executing linear SHM with an amplitude of 2 centimeters. When particle is at 1 centimeter from mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of acceleration. Then its time period will be equal to how much? Velocity my amplitude में लिख लो बेटा. V is equals to omega under root of your a square minus x square. And acceleration का formula minus of omega square into your x. So given in the problem की magnitude of the velocity is equal to the acceleration. यानी omega square into your x will be equal to omega under root of your a square minus x square. एक omega x square चलेगा यहाँ पर, isn't it? Amplitude is given as 2 centimeter. When the particle is at 1, यानी omega into x की value 1, that is equals to under root of amplitude is nothing but 2 square minus again x value is given as 1 in the problem. This is given as 1 centimeter. So omega is equals to under root of 4 minus 1. That will be equal to your how much for me? 4 minus 1 is root 3. So omega value is equals to root 3. So time period will be t is equals to 2 pi by omega. So that will be 2 pi by your root 3. Pi by root 3. C option will be the answer. Then a small body of mass 0.10 kg is executing a SHM of amplitude 1 meter and period 0.2 seconds. The maximum force acting on it will be equal to how much? Maximum acceleration क्या होता है बेटा? A max will be equal to your so F max will be equal to mass into your acceleration. So that is equals to mass into acceleration will be equal to A into your omega square. So it is your m into your a into omega will be equal to 4 into pi square divided by t square. Mass कितना दे रखा है? 0.1. Amplitude कितना दे रखा है? Amplitude is also given as 1 into 4. Pi square की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 approximately कैलकुलेशन के लिए. Divided by time period 0.2 into 0.2 approximate कर लीजिए आंसर आ जाएगा. अच्छा उसने 98 में लिया तो काम करो पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑफ 3.14 into 3.14 लेके कैलकुलेट कर लो बेटा. यू कैन जस्ट चेक विद द ऑप्शंस विद दैट. नेक्स्ट वन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज x इज इक्वल्स ये साइन फंक्शन है कॉस फंक्शन है बेटा. तो मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट फॉर्म बताया था. x is equals to 3 into ये कितना है साइन ऑफ योर 2t प्लस ऑफ योर 4 into योर कॉस ऑफ योर 2t है. तो एम्पलीट्यूड a1 कितना है 3 है और एम्पलीट्यूड a2 कितना है 4 है और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा पाई बाई 2 क्योंकि साइन फंक्शन है कॉस फंक्शन है. तो a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 16 यानी रूट 25 यानी ये हो गया 5. तो पूछ रहा क्या मैक्सिमम वेलोसिटी v max will be equal to your a into your omega isn't it. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a is nothing but what यहाँ पर amplitude. So that will be equal to 5 into omega value is given how much for me or 2. So 5 2s are 10. So this will be the answer.
बाकी के अभी बाद में कर लेंगे। ये लोग ये बाकी क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो टेक केयर बेटा, बाय।